हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एवर शाइन एंड एवर स्मार्ट। आज हम करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट पार्ट 5। सो लेट्स बिगिन। आज का बात हम करने वाले हैं अबाउट परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट। एज वी हैड सेड इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि हम टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल भी बना के देंगे और टाइम टेबल। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द टाइम टेबल, वी आर वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज इन द कमेंट्स, बट लेट्स गो विथ परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स विच वी हैव पुट टुगेदर फॉर यू। फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू क्रिएट अ कैलेंडर। क्या होता है, आपको टाइम वीकली और मंथली कैलेंडर स्कूल से ही मिलता होगा। वीकली एज इन योर टाइम टेबल जो क्लास होता है आपके। मंथली आपको पता होगा स्पोर्ट्स डे कब है, एनुअल फंक्शन कब है, किस दिन इन्वेस्टिचर सेरेमनी है, और वट एवर यू हैव इन स्कूल और एलुमिनाई मीट और एनीथिंग। सो वैसे यू विल गेट अ कैलेंडर फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ। सो यू हैव टू मेक अ कैलेंडर फॉर योर सेल्फ सो दैट you can know which days you are free or when you can study. Second is setting reminders. We will be taking each of these points in the other slides with more points and how we will describe how you need to understand the utilization of these. Third way is build a personalized schedule for yourself. Personalized क्यों? Again we are saying everyone is different. हर बच्चे का अलग होता है, सबको अलग अलग करना होता है. That's why we have to use personalized schedules for ourselves. Though we will be coming with something that is general and you can use it according to your will and wish. Next is use tools that work for you. You have to understand, again, the importance is you matter. It is you who needs to understand which tools are important for you. Fifth is prioritize. We have said prioritization's importance in our previous video. You can go to the playlist of time management and check the videos out. Sixth is make time to have fun for and make time for yourself, which we call as the me time. Seventh is you have to be realistic and flexible. Don't make something that is unrealistic and you can't move anything in it. If it's very rigid or you can't move anything, then you cannot use that daily planner for anything. अगर कुछ नया पॉप अप होगा then you cannot change it if it's not flexible. And be realistic. स्कूल से आकर बिना खाए you can't sit and एकदम 5 मिनट में खा के नहीं उठ सकते हो. So don't be very rigid with it. Be realistic and flexible. Now we will be taking each point personally. First point, as we had spoken about, is creating a calendar. Now how will you create a calendar? You have to understand important dates. क्या होता है, स्कूल के तरफ से एक तो कैलेंडर मिलता ही होगा. इफ़ नॉट ईयरली कैलेंडर, मंथली आपको एक शीट मिलेगा, उसमें दिया रहेगा कि इस डेट पे ये होगा, इस डेट पे ये होगा. वैसा करके यू विल हैव समथिंग. ना उसमें एग्जाम डेट्स भी दिए होंगे. लाइक वो बोलेंगे कि हाफ ईयरलीज माइट स्टार्ट फ्रॉम 22 सितंबर. आगे पीछे हो तो जाएगा, बट इफ़ यू हैव एन आइडिया ऑफ कब से है, देन यू कैन फिनिश योर सिलेबस बाय द डेडलाइन. नेक्स्ट यू हैव टू कीप इन माइंड योर टेस्ट, एग्जाम्स, डिस्कशंस, क्लास में क्या है क्या नहीं है. दिस इज़ काइंड ऑफ अ पर्सनल चॉइस दो, बट वी से कि यू शुड हैव इट ऑन द वॉल अबव योर डेस्क. अगर आपका डेस्क इज़ नियर अ वॉल, डेस्क के ऊपर वाले वॉल पे आप डाल सकते हो. लाइक इफ़ दिस इज़ योर डेस्क जिसके ऊपर आप रख के सामान रखते हो, उसके ऊपर वाले वॉल में यू कीप योर कैलेंडर ऑन टॉप सो दैट यू कैन सी इट एवरी डे. पढ़ाई के समय अगर आपको नोट्स लेते समय आपको लगता है कि आई शुड चेक इट आउट या डेडलाइन कब आ रहा है. Then in your personal calendar, mark your family functions, friends meetup या anything you are planning for yourself. This is the school yearly planner, as I had said. उनकी तरफ से कुछ तो मिलता होगा, हर स्कूल में मिलता है. Only then you can integrate it with your academic days and not make your whole year go for a toss. अगर आप day wise करना चाहते हो, so we will be taking that up later on. But firstly, this is a calendar which is पूरा साल का kind of a rough workout for yourself. We are coming to the second point, that is setting reminders. Now what are reminders? Reminders are so that you don't forget things. Like reminders will help you prevent things from slipping on hectic days. क्या होता है, मान लो आज आपका स्पोर्ट्स डे था, उसके बाद आपका प्रैक्टिस था, फिर आपका ट्यूशन था, और आपके फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बात करना था फॉर सम प्रोजेक्ट. बट उस दिन में यू वर सपोज टू ऑल्सो हेल्प योर पेरेंट्स क्लीन अप द हाउस दिवाली क्लीनिंग के लिए, मान लो. यू फॉरगेट दैट थिंग, तो हेक्टिक डे पे भूल ना जाओ. सो एवरीवन हैज़ अ मोबाइल फ़ोन नाउ डेज. इफ़ यू डोंट हैव अ मोबाइल फ़ोन, बाय एन अलार्म क्लॉक जिस पे आप डेट वाइज सेट कर सकते हो. बहुत सारे अलार्म क्लॉक्स मिल जाते हैं ऑनलाइन. यू सेट इट ऑन योर फोन, देन राइट इट डाउन इन अ फिजिकल प्लानर. दीज आर ऑल ऑप्शंस यू कैन यूज़. सो अगर आप अलार्म क्लॉक पे सेट करते हो, जैसे मेरे फ़ोन पे भी यू कैन सेट डेट वाइज अलार्म्स, देन यू कैन राइट इट डाउन इन अ फिजिकल प्लानर. अगर आप लोगों ने देखा है पिनिंटरेस्ट एंड मीशो वगैरह पे आपको प्लानर्स मिलते हैं खरीदने के लिए, यू कैन राइट इट डाउन अगर आप प्लानर्स पे ज़्यादा लिखने का आदत है आप लोगों का. नेक्स्ट इज यू हैव टू ऐड एन अलर्ट टू योर डिजिटल कैलेंडर. इफ़ यू आर यूजिंग गूगल कैलेंडर और यू आर यूजिंग सम पर्सनल कैलेंडर, then you can put it up as an alert on your digital calendar. These are the three ways you can set reminders so that nothing gets slipped out of your mind on a hectic day.
Coming to the next point. The next point is building a personalized schedule. As we had said, personalized क्यों? Because every person is different. You have to understand, you should only help maximize your time कि कहाँ पे मैं, if I have an exam tomorrow, then I can cut on the meeting my friends today part. So it has to be personalized according to your will and wish. Though we will be coming with something that is general, let us know in the comments if you are looking forward to it. Next, you have to understand it should be day to day or a daily planner kind of. If it's personalized, it should be a daily thing कि आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर इस टाइम पे ट्यूशन होता है, आपका इस टाइम पे मान लो कोई स्पोर्ट्स प्रैक्टिस है, और इस टाइम पे यू हैव टू गो टू योर फैमिलीज, किसी के घर पे जाना है, और हर सैटरडे नहीं या ऑल्टरनेट सैटरडेज अकॉर्डिंग टू यू. नेक्स्ट इज मेंटेन कंसिस्टेंसी. आज वीडियो देखा हमने और परसों से मैं भूल गया, ऐसा नहीं होता है. You have to understand that maintaining consistency is the key to success. Next is you have to avoid trying to put in everything in one day. एक दिन में सब नहीं होता है. Some children think आज ही मैं सारे subjects कर लूँगा या कर लूँगी. It doesn't happen. You have to understand, you have to space it out and put it correctly. If everything is coming in one day, no, you're making it hectic for yourself and you will have a big problem later on. Coming to the next. The next point is using tools that work for you. What kinds of tools will work for you is your personal opinion. Now we will be telling you how you can understand this. Firstly, you have to understand you can have it either written or digital. This is a personal preference, totally personal. Like हमारे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, they prefer digital tools for themselves, like alarm वगैरह digital होता है. Though some of us are like वो planner लेके बैठ के लिख के, if you paste it on top of your wall on the study table, that is how you can do it. So it is a personal preference. Now what kinds of tools are there? You can understand that there is something called planner, scheduling and journal. Now some people go for all three, some people do any two, and some people only go for one. So अगर आप आलसी बच्चे हो, you can go in for one. अगर आपको सच में लिखना है, then you can go in for all three. And अगर you are hell-bent on getting your work done more, you can go in for something more digital, क्योंकि वो आप time consume भी नहीं करते हो उसमें. Though I will not say anything like that, सबका time to time change होता रहता है. Planners can be daily, weekly, monthly or even yearly. You have to understand how to use them, and doesn't mean that you will just be decorating it वो pen वगैरह डाल के. Next is scheduling. Scheduling is more like प्लानिंग फॉर द फ्यूचर कि आप कैसे करोगे. आपका नेक्स्ट वीक टेस्ट है तो इस वीक का मैं प्लान कर लूँ, लाइक दैट. नेक्स्ट इज जर्नलिंग. लाइक जर्नलिंग इज ओनली टू रिमेंबर. As I had said कि if you are a little lazy in writing unnecessary things, if you think this is unnecessary for and it's wasting your time, you can go in for only bullet points that are only for you to remember. So these are some tools which you can use for yourself to have your time management up to a certain level so that you can get your academic work done. Next is prioritizing. This is the fifth point we are coming to. As we had said, हमारे previous videos में भी है, we have always spoken about prioritizing tasks. Firstly, you have to understand, you have to evaluate your priorities. एक लिस्ट बनाओ कि आपका प्रायोरिटी क्या है. your priority is academic success, but उसमें क्या क्या है. आपको मैथ्स है, आपका साइंस है, आपका एसएसटी है, आपका हिंदी है, इंग्लिश है. however you want to put it, कि आपका अगर मैथ्स वीक है तो that will be your priority, आपका हिंदी वीक है तो that will be your priority. you have to understand how to prioritize your task. फिर आता है अगर आप हाउस कैप्टन हो या स्कूल कैप्टन हो, वॉट एवर, अगर स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है, दैट इज योर प्रायोरिटी ओवर द टेस्ट, राइट. So you have to evaluate your priorities. Nextly, you have to understand deadlines are most urgent. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रायोरिटी देखते देखते they forget the deadlines. You should understand deadlines are more important than anything. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू फिनिशिंग सिंपलर टास्क फर्स्ट. क्या होता है, बच्चे ओवरवेलम हो जाते हैं. अगर ज़्यादा टफ टास्क होता है, यू कैन नॉट फिनिश इट, यू गेट बॉक डाउन एंड आपको लगता है मेरे से हो नहीं रहा है. फिनिश द सिंपलर टास्क एंड देन यू कैन गेट बेटर एट योर टास्क. नेक्स्ट इज एकेडमिक वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन वेट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एकेडमिक्स में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, इट इज़ नॉट ऑलवेज एग्जाम से आगे पीछे. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर एकेडमिक सक्सेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. फ्रेंड्स को तो समझ ही आएगा अगर आप सब पढ़ रहे हो तो योर फ्रेंड्स विल नो, एंड फैमिली विल ऑल्सो अंडरस्टैंड यू आर इन अ इंपॉर्टेंट क्लास और पढ़ाई कर रहे हो और एनीथिंग. एंड यू शुड लर्न टू से नो. हर चीज़ में हाँ मत कहो. We have taken out a video on FOMO, that is the fear of missing out. Usually children get worried about missing out on stuff and they don't say no, and they get worried ki if I'm thrown out of the group or something. We will be putting the link in the description. You can go and check out that video if you are really scared of saying no, कि आप बोल नहीं पाते हो क्योंकि people are getting on to you and saying कि oh God they can't come. So don't worry about that. If you're a student, you have to understand that FOMO is not a great thing. You should go in for something called JOMO. This is put in our video. We will be putting that in the description box only. Then you can understand what we are seeing here. And don't forget to see this video till the end. Go and check that video out afterwards.
Now, this is the best part which everyone thinks. This is the sixth point, that is making time to have fun and for yourself. As we all know, everyone likes that me time. You have to understand me is important. Firstly, your mental well-being comes. You have to understand your mental well-being is more important than anything else. If you cannot be mentally fit, you cannot be physically fit, and your academic success does not come. Next, you have to understand, you have to include time for yourself. हर समय it's not only friends and family, it is you also. कभी कभी होता है कि अकेले बैठ के you are just having a cup of coffee while reading a book, और आप खुद से एक सीरीज देख रहे हो, या आप खुद से कुछ बना के खा रहे हो. So it is sometimes for yourself. Stressful times में it helps you to really reduce your stress. Like anything, anxiety and stress can be reduced by having time for yourself, and space to relax is very important. So you have to have some time for fun sometimes. हमेशा friends and family नहीं होता है, but if it is your friends and family, yes, you can go in for that. This is a very important point. कुछ बच्चे छोड़ देते हैं. So you have to have time for yourself, whether it's a light walk or listening to music alone in the room. Next is, you have to understand, you have to be realistic and flexible. As we had said, you have to be realistic. You cannot have something very foolish कि मैं स्कूल से आऊँगा 15 मिनट में खा लूँगा 30 मिनट्स में नहा लूँगा. नहीं होता है, कभी कभी टाइम लगता है, खाते खाते बात हो जाता है एंड ऑल. एंड फ्लेक्सिबिलिटी कि यू विल नॉट ऑलवेज हैव समथिंग रिजिड कि मैं स्कूल से आके पढ़ाई नहीं, सॉरी, खाना खा के पढ़ाई करके सो जाऊँगा. यू हैव टू हैव इट फ्लेक्सिबल, क्योंकि अचानक से मम्मी बोलती है चलो आज हम लोग बाहर जाएंगे किसी मौसी के घर. यू कैन नॉट चेंज इट इफ इट इज सो रिजिड. सो अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज, जो देखा नहीं, अनदेखे चीज़ें आ जाते हैं जो फ्यूचर में आते हैं. लाइक मम्मी पापा ने कुछ प्लान कर लिया, या फ्रेंड्स ड्रॉप इन, और समथिंग कम्स on. So you have to have a flexible thing. You have to learn to be patient. You have to be calm. ऐसा मत सोचो कि everything is against you. Next is, sometimes things don't go exactly to your according to your plan. क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं मैंने प्लान तो ये किया था लेकिन ये नहीं हुआ, ये हो गया. So don't need to get bogged down by that. You have to understand that you have to be realistic and flexible. And आप लोग बड़े बच्चे हो, अगर छोटे भी हो, तो you have to grow up and understand कि ऐसे ही चीज़ें होते हैं लाइफ में, कि it doesn't always happen like this. नेक्स्ट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी रियलिस्टिक. आई टोल्ड यू, रिजिड थिंग्स डू नॉट वर्क. अगर आपने ऐसा प्लान किया यहाँ पे ये नहीं होगा, इसमें कुछ गड़बड़ आ जाएगा, मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया. सो यू शुड अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू बी रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल विथ योर टाइम टेबल. सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स टेकन टुगेदर. So you have to understand, you have to give yourself time to grow and learn. Only then you can be a better version of yourself. Only then you can get academic success. So we will be discussing few of these points also before we end the video. You have to understand that time management isn't about just sticking to a rigid schedule. It is also giving yourself space for change. You have to understand, अगर आप 10th से 11th में आए हो, 11th से 12th में आए हो, 9th से 10th में गए हो, मतलब any kind of student, if you have started watching our videos, you will know that we are not only talking about academic success for studies, we are also talking about things which are not taught in school. So you should understand कि अगर आप हमारा वीडियो देख के टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, या you have just come back to got our channel from somewhere and you are thinking about time management, you have to understand you can't just stick to a rigid schedule. होता नहीं है आराम से. You have to give yourself time and you have to give yourself space to change and understand these things. Next is, everyone experiences stress. ऐसा मत सोचो कि stress सिर्फ आपको हो रहा है. Then you have to understand to give yourself time to grow. You have to give yourself time. ऐसा मत सोचो कि अचानक से एक रात में मैंने टाइम टेबल बनाया कल से हो जाएगा. स्लोली स्लोली होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लिमिट्स. अगर आपको लगता है कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आई कैन डू सो मेनी चैप्टर्स, होता नहीं है. यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम. हल्का हल्का प्रोग्रेस होता रहेगा आपका, धीरे धीरे होगा. वंस यू रीच अ पीक आपको लगेगा कि नो आई कांट डू इट, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे, दिस इज हाउ यू विल प्रोग्रेस फर्दर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लिमिट कि इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता हूँ. आई हैव टू स्लोली टेक इट. डोंट पुश योर सेल्फ टू हार्ड. यू हैव टू टेक इट स्लोली एंड आराम से, प्यार से. सो that's it for this video. Thank you so much. We know you can. Keep smiling. Be together. Together we can. Don't forget to like this video, share it with your friends, subscribe and hit that bell icon, and we'll be back with another interesting video. Thank you so much and bye guys.